Hello everyone. Guys, am I audible? Hello, sir. Yes. Good. Just give me a minute. Guys, shall we start now? How many people are there? Start करते हैं. Let's no point waiting anymore. I was already late by 5 minutes myself. Let me know when you guys can see my screen. Can you guys see my screen? Yes. Good. Good. So how was the week, by the way, for everyone? पहले 2-3 दिन तो ठीक था सब, but Friday was challenging. Friday was? Friday was little bit challenging, मतलब मुझे लगा. Why? बार-बार stop loss hit हो रहा था. Friday sideways था ना? हाँ वही तो वही 2-3 trades लिए तीनों में. If you see, Friday was within the range of previous day. So sideways day. So you should trade a sideways day like a sideways day. If you start trading a sideways day like a trending day, obviously you will make loss. Anyway, anyone else? How was your week? So वीक अच्छा था इस बार. आई एम ट्रेडिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम. फ्राइडे आई एंडेड अप ओवर ट्रेडिंग, तो उसके बाद मैं रुक गया था बिकॉज साइडवेज में अभी आपने जैसे बताया यू शुड ट्राई एंड ट्रेड ऑन द एक्सट्रीम्स. सो दैट वाज समथिंग आई चूज टू डू अगली बार, क्योंकि इस बार में तो मेरा भी 2-3 बार ऐसा लेट हुआ तो मैं रुक गया था. तो साइडवेज का आइडिया नहीं था. ट्रेंडिंग डे में तो मोर और लेस हाँ मतलब अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. तो ये निफ्टी का चार्ट है. I don't know why it was so difficult. This was the previous day. This is the trend line. The only trade full day you had was this was the trade. That was the only trade which was worth taking. And the start of the day. That's it. But this was यहाँ पे at least you can say कि हाँ your stop loss is big, so maybe you will not take the trade. But this was the only trade worth taking. Near the trend line, test of the extreme, you saw a red candle. This was the entry. Booked out here because of this candle. खत्म. उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं आया. उसके बाद ट्रेड एंटर करने लायक था ही नहीं कोई.
I don't know why. उसके बाद at max if you could take a trade again it was here. Double top यहाँ पे entry, exit here after this candle. That's at max one more trade. That's it. It was very easy, very simple to follow, but I don't know how why people got confused. अब जैसे यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी है, इसके बाद if you take an entry here, what is the logic of taking this trade? You are seeing already a top here which has fallen from here, and why will you take a trade on this candle? Obviously you will make a loss. Again here a good candle, why will you take a trade but here? Already you have seen market falling from here. So if you don't give importance to the context of the market, you will make loss. So there was nothing different. It's just that people were so excited because they found 2-3 days of trending move and they just forgot कि market में sideways movement भी होता है. So change that habit and you will make money. If not, this will continue. सर डे का जो फर्स्ट कैंडल के बाद लॉन्ग ट्रेड था वो तो समझ आया था, लेकिन एक बार जब आप कह रहे थे कि उसी टेस्ट ऑफ एक्सट्रीम से जब नीचे गया तब ट्रेड बनता था, तो उस पे आप कौन सी कैंडल पे एंटर करते? लाइक जो हमारी 9 जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है उसका जैसे ही लो ब्रेक होता था, 10-5 की कैंडल का लो ब्रेक होता जब। सिंपल है, पहले इसीलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेंड लाइन बनाओ. दिस इज द ट्रेंड लाइन राइट, पहले कैंडल से ब्रेक हुआ यहाँ पे. सो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यू डोंट ट्रेड. आई ऑलवेज से यूज वेट फॉर सेकंड एंट्री. यू गॉट दैट सेकंड एंट्री हियर, या यू कुड हैव एंटर्ड हियर. ये जो रेड कैंडल दिख रही है ये वाली, this is where you could take a trade. You could enter here, okay, might be your stop loss would have got hit here, okay, again you enter here. So यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं, यहाँ पे एंटर किया स्टॉप लॉस हिट, वापस यहाँ एंटर किया. दिस वाज द बट टेस्ट ऑफ द एक्सट्रीम. इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद मतलब थोड़ा हेजिटेंसी नहीं होना चाहिए एंटर करने में? क्यों भाई, ग्रीन हो रेड हो उससे क्या मतलब है? कंटेक्स्ट मार्केट का क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस डबल है. टॉप, ठीक है. हेजिटेंस के चक्कर में तो लोगों का प्रॉफिट ना, हेजिटेंस तो यहाँ होनी चाहिए थी. ग्रीन कैंडल है बट रेजिस्टेंस पे है, यहाँ हेजिटेंस होनी चाहिए एंट्री करने में, यहाँ क्यों होगी? 10 के कैंडल में And this candle at max, if you see, this is what type of, this is doji. It's not a very good green candle. It's a doji. Just shows that bulls and bears both are in control. शुरू वाली नहीं, जो इसके पहले बनी है ना, जो आपने कहा था ये वाली तो उससे क्या मतलब हुआ यार? टेस्ट ऑफ द एक्सट्रीम है ये तो. इसके पहले हुआ क्या है? ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक हुई है ना. ठीक है. You have a resistance at top. You should always look for reversal here. 80% of the time a breakout will fail. So अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है, for me if I short here I'll put a stop loss actually above this trend line, not here, because the chances are high it will touch this. Anyway. सर एक और क्वेश्चन है इसी पर, इफ यू कुड जस्ट गेट बैक टू दैट चार्ट. सर आपने बोला वेट फॉर सेकेंड एंट्री, तो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद तुरंत वी विल नॉट शॉर्ट, तो वो एक बार सेकेंड एंट्री का एग्जांपल समझाएंगे प्लीज? यही है ना, ये ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ पे एंट्री नहीं ली मैंने, राइट. Instead I waited for it to test the extreme or give me a lower top lower bottom. Instead of giving a lower top lower bottom, gave a higher top, but then it gave me entry over here. That is the entry bar, right? That is the signal bar, the red. Yeah, that is the entry bar. You could have entered here because ये बार इसके नीचे actually गया था, right? If you see इसके नीचे गया था. So अगर SLM ऑर्डर डालते तो यहाँ पे execute हो गया होता है स्क्रीन बार पे short trade already. And ideally you said stop loss थोड़ा दूर होने से protected रहेगा अगर वो ट्रेंड लाइन रहता. Stop loss अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मोस्टली यार, इस कैंडल के ऊपर साइज पे डिपेंड करता है. अगर साइज ज्यादा रखता तो ये जो ग्रीन कैंडल इसी के टॉप पे रखता, राइट. साइज कम रखता तो इसके ऊपर रखता, ट्रेंड लाइन के ऊपर.
और सर साइड उसके ग्रीन के ऊपर मतलब क्लोजिंग बिन अबव दैट राइट मतलब No, not I just put a stop loss over here. अच्छा even if it's for a fraction of a Size second. is big, then I would have to keep a stop loss over here. Now, what if it, because the context, if you see, यहाँ पे भी तो lower bottom है ना, double bottom है. Right. Good reversal. If it continues to go up, I end up making a big loss. The best thing to do here is to keep your size small, keep a stop loss over here. If it Right. goes up, again add more. हाँ, और सर आपने फिर बोला कि द सेकंड ट्रेड ऑफ द डे वाज जहां पे डबल टॉप बन रहा था, आप थोड़ा राइट साइड में अगर आएंगे यहाँ पर तो सर हाउ दिस अ डबल टॉप, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिपल टॉप राइट, This अगर आप पहले वाले this top and this top अगर consider अच्छा, और ये वाला पहले वाले को नहीं मानेंगे जहाँ पे आप अभी डिस्कस कर रहे तो मान सकते हो, मतलब this is very almost similar, you know. ओके ओके डबल टॉप मान लो, ट्रिपल टॉप मान लो, कुछ भी मान लो, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे क्लियर कट रेजिस्टेंस में दिख रहा रेजिस्टेंस है, हाँ राइट है. चलो, let's go on our weekly. So again, this week was totally in line with what was expected. Nothing new, no high surprises. Totally the way we expected. Market behaved that way. Okay. US. So S&P 500 as expected. We said maximum एक बार और टेस्ट करेगा, and that's what exactly it did, because the 1, 2, 3 leg almost looks like now is over. But like we mentioned even last time, unless and until this low is taken out, new down move will not come. So for me, mostly it looks like the downtrend is over. Okay, it might just consolidate here a bit in this area, this being the upper reason, this being the lower reason. And once it crosses either of this side, then only you will see a trending move. Uske alawa, it will mainly be in this range. Okay, so इस range में यहाँ पे buy करना है, यहाँ पे sell करना है. So that's what my expectation is for even this week, that market will be sideways in this particular range. Range is big, so obviously intraday you can trade. Yeah, but I don't see a new down move unless and until this starts getting crossed. Okay. Similarly, Nasdaq में देखो, तो Nasdaq में it was very clear, ये लाइन अभी भी देखो बनी हुई है, इसके नीचे जाओ, शॉर्ट लेना था, worked very well, closed near the bottom. But now if you see, it's in a demand zone. S&P 500 is also looking like it's in a demand zone. So again, now unless and until we start breaking below this low, last week's low. अब ना देखो, अब एक और चीज है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका अब अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अलग अलग चीजें होती हैं, राइट. सो इट्स माइट बी वेरी मच पॉसिबल कि आपका इस वीक में ये इसके नीचे जाए, बट ये यहाँ तक जाए फिर वापस ऊपर आ जाए, मतलब यू सी अ विक एंड देन क्लोजिंग अबव. सो it can still go down. If someone wants to take a shot, they can take a shot below this, but you will have to keep trailing it because there is a good amount of demand here. Okay, so if it goes down, keep trailing it. The moment it reverses, you have to close your trade. Okay, so on this again, the similar logic might go down, but will end up above this. I am not expecting markets to go below this demand zone. Okay, so almost the bottom is in place. Again, I'll keep it in sideways to downward. Then और क्या बचा, Dow Jones. Again very similar. This was the line we discussed. इसके नीचे जाएगा, sell करना है. Similar thing happened. This can go a bit more down because I don't see any kind of support here. The only major support you see is in this area. ये एरिया एक सपोर्ट वाला एरिया है, and then after that सीधे ही. So Dow Jones looks a bit weaker. In case it goes below last week's low, it can actually
continue going down some more to this level minimum. So Dow Jones is a bit weaker, so this one will keep red. Okay. बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर है this area. Okay, so it has, even if this goes down, you have to, like on a 5-minute 10-minute candle, obviously you'll get a good move, you can make money, but swing trade नहीं ले सकते unless and until this low is crossed, ये candle का. Yeah. फिर यूरोप में क्या चल रहा है भाई? अब देखो यूरोप में this was the line we said, इसके नीचे जाएगा, you should short. If you would have shorted, you would have made good money, but if you would have not booked your profit, you would have ended up in loss. So that's why it's important you trade. Now again, this is looking more like a bottom has already been made. If you see, this is a good demand area, this whole of this good demand area almost looks like a bottom is made. So I'm expecting nothing more than a sideways kind of move, sideways to down. Okay, sideways to down, because this is context. If you see, good downward momentum, and this is just a doji bar. So for me, it will be sideways to bottom, not sideways to up. Then UK, very similar, sideways to up for this. Germany, again, if you would have started here, you would have made money. If you would have not traded, you would have made loss. So that's why, again, trading is very important. Okay. Now this is a good reversal bar. It is, and if you start going above this last week's high, the idea should be to go long, because even you will break your trend line plus last two things are there. So it should be, you should be looking to go long if this height gets taken out. Asia में देखो Hang Seng clear cut bearish. I don't see any kind of bullishness at all. Looks very clearly with gap, good momentum, बढ़िया down trade. ठीक है, again shorts should continue to hold their shorts. New shorts can be added if last week's low is taken away. So looks very bearish. Okay. China. Again, China also last week only we discussed, this was a good support area which it broke. So it was very clear that a good down move will come, same as happened. Now if you see China again, you have a demand zone in this region, but still you have space for this place for it to go. So again, this will remain negative. So Asia, I think, looks very negative. Even same as Nikkei. Nikkei का ये आपका demand zone है. Okay, there is still some falling that Nikkei should do. So this is also right. So Asia looks negative. Europe and US almost look like they are bottomed out. So that's the message global markets are giving. Dollar index dekh lo, yeah. So very much in line with what you saw on the indices. Okay, breakout from the channel, continuation. It is in the supply zone. If anything, you should look for selling it on any weakness, but as of now, it looks really bullish. And if it crosses this 99.4 last week's high, you can actually see dollar going all the way up till here, 103, the recent high. Okay, so, and if that happens, then you'll see even more decline in Asian indices. Okay, so right now this looks bullish. Okay, but the idea should not be to go long on this. Okay, idea should be to avoid going long because it's in a supply zone. Okay, only you should take in long if it crosses this whole supply zone. मतलब इसके ऊपर 100 के ऊपर actually 100 के ऊपर अगर निकल जाता है डॉलर, then yes, you should look to buy for 103. But in this zone, you should not look to go any long or anything. You should just wait for it to decline. If it shows a decline, then yes, that will be a good short. So right now it is looking bullish, so we'll keep it on the bullish side. Crude dekho, went up, declined, very bearish signal.
Okay, context is bullish, but this is a very good bear candle. If it starts going below last week low, then a sell-off can come in crude, and you should look to sell crude for a minimum target to this channel support line. Okay, and even if it crosses that, then the lower end of the channel. Okay, so right now the idea should be to look for short positions. At the same time, long positions you should not initiate unless swing long position you should not initiate unless and until again it goes past this, क्योंकि ये बहुत बड़ा range है. It might be very much possible कि crude just remains in this range, neither breaks that, neither breaks this, just remains in this range while the markets actually decide what are they going to do next. Okay, gold में देखो, again very similar, tested its recent high, double top in place. If this goes, look to take a swing trade on the short side because you will make a good amount of money in gold. If this goes, take a short for minimum 48,000. So it's good amount of money you can make. And even if this goes, then look for this 44,000. So gold is something which might have already started its long-term downward journey. Looks like that, but wait for this trigger to happen. Yeah. The gold also, the idea should be to look for shorts. And this is all with something which giving me a confidence to say, now this short rally is now overdone. Market should be now bottoming out. You can see a little bit of dips here and there, but overall the idea is to look for long, start creating portfolios and things, and it doesn't happen in a day. It takes a week, 2 week for markets to find bottom. Something which has been falling for 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks will not make a bottom on a single day, one day that you will see bottom one day. It takes time, right? Consolidation always takes time, so you might see such thing happening for next 1 week, 2 week, but fair bit the idea is कि हाँ हो गया. Short positions मत explore करो. Look to go for long positions, not on the short positions. Keep short positions only for intraday. Yeah. Currencies देखो, JPY USD reflecting what Japanese index was, clearly bearish in nature. Okay. Euro USD again reflecting what European market was, almost done on the downward side. Unless and until you see this breaking this demand zone, should remain sideways to up. Okay. USD INR again, if you see almost at the top, double top is almost there. Now you have to just see, does it stop there? If it goes above this, then yeah, you can see further decline in Bank Nifty mainly, not in Nifty. Okay. If it breaks below this, then you can start seeing a good up move in the Bank Nifty. So we'll have to keep watching this. बढ़िया, इस पर ट्रिगर लगा देते हैं. ये रहेगा अभी साइडवेज है, साइडवेज टू अप है. To be very honest, this is very bullish right now. Okay, but we'll keep sideways just because this range is too big. GBP USD clearly negative. Yeah, so pound is very negative, so UK market should be a bit negative. UK market. Okay, so UK market is actually sideways. Pound का support है क्या इधर? This is the support. So British pound can still fall, guys. You can actually see UK market might slide down a bit and again test this area, but stop there. So again, yeah, looks like bottom is in place, just that. Yeah, so this is how the global market looks like. Okay, apart from Asia, everything else looks like is almost near the bottom or the bottom has already been made. Okay, it's only Asia which is looking still weak.
Any doubts, guys? Any doubt on any of these things? So why did you say that if the rupee depreciates, then it's bad for Bank Nifty? Depreciate नहीं appreciate ना. USD INR है, USD numerator में है. This falling means rupee getting stronger. It going up means rupee being depreciated. So if it goes down, then it is good for Bank Nifty or bad? If it goes down, then what does it mean? That the rupee is appreciating. Yeah, so obviously it is good for banks. Here USD INR में USD न्यूमरेटर में मैथ्स यार. जब वो नीचे जाएगा तो क्या होगा, या तो यूएस डॉलर कमजोर हो रहा है या आईएनआर में स्ट्रांग हो रहा है, तभी तो कम होगा ना ये. लाइक इस सब में यूएसडी डिनोमिनेटर में है. स्ट्रांग हो रहा है तो वो अपने आईटीज के लिए अच्छा है ना, आईटीज कंपनी के लिए. हाँ, good for IT obviously, and you've seen IT performing good all the while that USD INR was depreciating, IT was doing good. What is the confusion? I cannot understand. For me it is very simple. मतलब क्या confusion है? And he is asking कि बैंक निफ्टी बैंक्स को फायदा कैसे होता है कि अगर यूएसडी में रुपी स्ट्रांग होता. यार कंट्री की तुम्हारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो बैंक्स को फायदा होगा ना. मतलब isn't it too obvious? Yes, I got it. If the rupee is strong, it's better for the banks, and because whatever you are selling, बाहर यूएसडी चलता है, तुम्हें कम मतलब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का. Isn't that good? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो. इंडिया का नेट इंपोर्ट पॉजिटिव है या नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, और ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस कंट्री है इंडिया? ट्रेड डेफिसिट है सर, ड्यू टू क्रूड ऑयल. राइट, ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रेदर देन एक्सपोर्ट, है ना. तो जब हमारा रुपया स्ट्रांग होगा तो हमें कम रुपया देना पड़ेगा ना सेम अमाउंट ऑफ चीजें खरीदने के लिए. सो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी. अगर ट्रेड सरप्लस कंट्री होती, सो हमारा रुपया अगर वीक होता तो वुड हैव बीन बेटर. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? जैसे आईटी फॉर एग्जांपल देख लो. आईटी इज व्हाट? आईटी इज मोस्टली एक्सपोर्टिंग. सो फॉर आईटी इट इज गुड if rupee is weak, right? Because they are getting paid in dollars, and if rupee is weak, once they come back home, they are having huge amount of profit. $1 आज 80 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और $1 75 रुपए है. टीसीएस ने $1 का फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट किया, ओके, बाहर अपनी सर्विसेज बेच के. अगर रुपया कमजोर है तो इंडिया में उसके रिपोर्ट में 80 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है. अगर रुपया स्ट्रांग है तो उसको रिपोर्ट में 75 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है. तो फॉर आईटी इट इज गुड व्हेन रुपी इज वीक, राइट? बिकॉज आईटी इज एक्सपोर्टिंग, it's more export oriented, IT and pharma. But overall on a country scale, if you see, we are importing more, we are buying more. So आज हम $1 अगर हमारा 80 रुपए का है तो मुझे कुछ बाहर से खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे, जबकि अगर मेरा रुपया स्ट्रांग है तो मुझे सिर्फ वो 75 रुपए में ही वो चीज मिल रही है. So overall it is good for the country. So for sector it's a different thing, for overall economy it's a different thing because of the way our economy is. Understood or not? Still doubt? No, sir. सर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलायंस क्या बनता होएगा? लेट्स से अगर क्रूड ऊपर जा रहा है और यूएसडी भी ऊपर गया है, तो हाउ अबाउट रिलायंस और अदर रिफाइनरीज लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल?
Refineries, it is not good. Crude price goes up, it's difficult for refineries because you have long-term contracts in place where you, and that's something which I'm telling you because I am in that business. You already have a contract, a long-term contract with HPCL, BPCL and all to provide you gasoline, petrol, matlab, at a particular rate. And if crude goes up, all these refineries are actually paying extra for the crude. But at the same time, they are actually selling at the price they are already contracted 5 साल 6 साल के लिए. So that's bad for them. But then how come Reliance had a good Reliance is a rally? producer also. Reliance also produces crude, not only refines it. It is both. It's like Shell. The Shell को नुकसान नहीं होता है चाहे क्रूड कहीं भी जाए क्योंकि हम तेल निकालते भी हैं और तेल बेचते भी हैं. So for us, it is not a problem because if crude oil goes up, we are making money there, and we are giving it to our own refineries. That's the same case with Reliance. It actually doesn't matter much for Reliance. It matters more for HPCL, BPCL because they are only refiners. They don't actually produce crude. They have to buy crude and then they refine. So for them, it is negative. सर जब ऐसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो फिर उसमें सब्जेक्ट अमेंडमेंट्स भी तो होते हैं ना मतलब लाइक डिपेंड करता है तुम्हारा बंदा कॉन्ट्रैक्ट वाला कैसा है क्या टर्म्स डाले. दैट इज डिफरेंट डिस्कशन. एंड सर वो हेज भी तो करते हैं. नॉट एवरीवन इज अलाउड टू हेज. कैन नॉट. छोड़ो वो अलग चीज है. वो दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस. वो ऑयल एंड गैस बिजनेस की बात करने लेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा. सर एक इन्फ्लेशन को लेकर डाउट था. सर इन्फ्लेशन वाला चार्ट छोड़ नहीं. चार्ट छोड़ दो. इन्फ्लेशन की चार्ट देखने की जरूरत नहीं है. जब जरूरत थी तब दिखाया था. अभी उसको देख के कंफ्यूज हो. छोड़ दो उसको. तो सर उसमें इन्फ्लेशन इज लाइक मोर देन ऑल टाइम हाई. तो दिस इज यूजुअली बैड फॉर इक्विटी मार्केट. बट सिंस वो यूएस की इन्फ्लेशन है तो सर इज इट गुड फॉर लाइक इमर्जिंग मार्केट्स के वहां से फंड निकलेंगे? Because high Markets are inflation so is interconnected. lower. Right now, it is not US का inflation और Russia का inflation और India का inflation. वो अलग है अलग अलग. But कहीं अगर inflation ज्यादा है तो समझो कि तुम्हारे यहाँ भी वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि you are buying things, selling things, you are trading with them. वहाँ अगर US में inflation ज्यादा है, it will impact you here also. तो सर इज इट के अब इक्विटीज में मतलब सिंस इन्फ्लेशन इज हाई तो रिटर्न्स वुड बी लेस एंड लोग बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे? नहीं बॉन्ड्स की तरफ लाइक डिफरेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे? यार ऐसा नहीं होता है. दे आर एट ऑल टाइम हाई तो वहां से तो उसको गिरना चाहिए ना. वो तो वही है ना जो लॉजिक लोगों का कि हायर टॉप हायर बॉटम बनता रहा तो मार्केट तो इस तरीके से हम इन्फिनिटी चला जाएगा क्योंकि पहले भी हायर टॉप हायर बॉटम था फिर अब एक और नया हाई बन गया. वो तो वो लॉजिक है ना कि हर नया दैट इज एट ऑल टाइम हाई मतलब कि ठीक है द वर्स्ट इज बिहाइंड नाउ इट विल गो कम डाउन. सो नाउ इज द टाइम फॉर यू टू बाय इन इक्विटीज नॉट टू गो एंड बाय इन बॉन्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी हायर. बॉन्ड्स में कब कोई चीज कब खरीदते हो जब सस्ती होती है तब ना. व्हेन इन्फ्लेशन इज एन ऑल टाइम हाई that means what? And equities are at almost beaten down. So right now is a time for you to buy equities, not go and buy bonds now. Bonds कब खरीदोगे? When market is at all time high, because at that time your bonds will be cheaper. सर बट कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता ना. You don't know that. ठीक है. There are governments to control that. No, they will not let it run. सर इस केस में भी एक यूएसडी आईएनआर के केस में लाइक दिस इज वेयर आरबीआई एंटर्स और वो Yeah, exactly. they strengthen the rupee. Always buy the fear, man. Always buy the fear. That's how your investments should be. Anyway, double tops and double bottoms उसी basis पे तो बने हैं. चलो, any doubt, any more?
चलो फिर अपना मार्केट देखते हैं. So Nifty देखो last week we discussed. This was the area. Almost bottom is closed. This is what it will test. That's exactly what happened. Nifty went down, exactly tested our reason that we expected. Almost समझो कि 10-20 पॉइंट का अंतर रहा होगा, but that's it. And reversed very strongly. Now it is near a resistance of this particular trend line. Okay, our target on the downside is done. Okay, I have already started buying. You guys should have also bought if you had paid attention to what was told since last 2 weeks. Okay, you should start creating portfolios, put money in mutual funds. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जाके खरीदो. Next what? Next at max. Now if it goes above last week's high, you should look to buy. As simple as a very strong reversal candle goes above this, look to buy. Trading के लिए, if you want you buy over this, you should just keep a small stop loss क्योंकि very much possible ऊपर जाए वापस नीचे आके थोड़े दिन दाएं बाएं करे before it actually goes up. And that's how first wave is. If you read Elliott waves, the first wave is not something which is very convincing. It always traps people because everyone right now, everyone would be looking to sell it near this trend line, thinking the trend will still continue on the downside. That would be the major thinking of most of the traders. But having said that, might be true on a say intraday chart, but on longer time frame for me, I see there is a very strong support, and for me this downside is over. Now the most it can happen is that it again comes down, then it will test this. But for me, I will not take a short swing trade in this reason. For me, a swing trade will only now start only if Nifty starts going below last week's low. Uske pehle, I'll just look for opportunities where I can enter long. If not in trading, look to invest. Okay. And on the trading part, if it starts going over last week's high, we'll look to go long. Okay, so on Nifty, my view is bullish to sideways. Bullish to sideways. I'm putting it here sideways because upper resistance have and this candle is very big. So very much possible that this next week it just remains in this region rather than breaking out. Okay. So, sir, if it remains in this region, we can't take intraday trades. Intraday trades slow. This reason और क्या? Intraday के लिए काफी बड़ा range है. You'll get good trending moves in intraday. The idea is कि I'm not saying that you should not go and do any kind of short swing trade. Should not do that. Take intraday short trades. No one is asking you not to. अब जैसे for example Monday यहाँ पे खुलता है last week high के पास, वहाँ से rejection मिलता है, look to short, right? Because there is a triple top, it will be in place almost. But at the same time, I'll not take a short position as a swing trade. I'll look to close that position by the end of the day. सर कॉन्टेक्स्ट तो अभी भी वीक नहीं है बिकॉज अगर डाउन ट्रेंड है. क्या कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहे हो? आई एम सेइंग अगर if we look at the context of the market, so isn't it still a downtrend? So shouldn't we look at positional shorts from a context point of view? It is in downtrend, but then you have, when you say context varies on time frame. Okay, context is not same in every time frame. Right now you are looking how it is short. If you are only looking at this part, if you are looking at this whole part, then you see it has reversed from a major support. Okay. If you start looking at this part, then it seems like यहाँ हो गया, uptrend है, हो गया आपका consolidation, now upward आना चाहिए. So context also depends on how you are viewing at it. So your trade has to be based on what you are looking at, what time frame. What I am saying for me कि long term investment करने का समय आ गया है, because I am seeing this. I am seeing this कि हाँ, this is a sideways move in this. This is a consolidation in this big uptrend. For me now there is a new rally which is going to start. If I start looking at maybe a
4-hour chart, in that case, yes, I'll be looking to short below this. If I, like I said, Monday को अगर खुला यहाँ पे मुझे दिखता है rejection, I'll look to short. Okay, if I start even looking at a very even smaller, then I should again look to go long, because this is upward move, strong upward move sideways, and I should look to go long. So it depends on how you're viewing the market and what time frame, what is your purpose. What I'm trying to say, I'm not going to take a swing trade, because a swing trade means 7 days, 8 days ka trade. I am not looking to take a swing trade basis this. Okay, sir, got it. Yeah, so every different time frame has different things going on. Any doubt? Sir, where would you change your view अगर आपको change करना हुआ? बोला तो लास्ट वीक लो के नीचे अगर जाता है तो यार we'll look to again go short. We'll take a swing trade then. But इस रीजन में ये इतना बड़ा जो रीजन है, इसमें I look to take intraday or maybe a ST, BTST kind of trade. यहाँ सेल करो ऊपर वाले रीजन में, यहाँ पहुंचे सेल करने का, यहाँ पहुंचे बाई करने का. ये जो आपका पूरा रेंज है 16,760 और मान लो 16,800, मान लो 16,800 से लेके 15,700 तक का ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का जो ये रेंज है, विद इन दिस आई विल नॉट लुक टू टेक एनी स्विंग ट्रेड. विद इन दिस आई लुक टू टेक only intraday or a BTST, STBT kind of a trade. Yeah. सर एक और क्वेश्चन है. सपोजिंग एक बार मैंने आपके लाइव ट्रेड में आई रिमेंबर सीइंग की ट्रेंड Just a minute. Just a minute. Hello. अरे वो ब्लू डॉट वाला है क्या? ठीक है भेज दो. हाँ तो उसको दूसरे फ्लैट पे भेजना, जे ब्लॉक वाले पे. मैं अभी उसमें नहीं, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है उस वाले पे. इसको जे ब्लॉक पे भेजना. ओके ठीक है. हाँ जी बोलिए सर. सर आई रिमेंबर एक बार लाइव ट्रेड में, जैसे सपोजिंग इट ब्रेक द ट्रेंड लाइन ऑन द अपसाइड, लेकिन तो भी आपको उस समय क्या दिखा था, बट यू हैड शॉर्टेड एंड यू मेड रियली गुड मनी. सो was it like a trap which you identified, or how did you identify the fake breakout, or how did you spot the for rejection? example, ये ट्रेंड लाइन है, right? कल को यहाँ ब्रेक होता है, but there is also resistance over there ना. So ये ब्रेकआउट होता था, I will not buy. Okay. I will in fact look to sell if I see any kind of a failure from this level. But that's what I see. It's not always about, it's not that simple. मतलब इतना अगर easy होता है कि हाँ ब्रेकआउट पे बाई करना है, ब्रेकडाउन पे सेल करना है, टॉप पे पहुंच गया रेंज के तो सेल करना है, ब्रेकआउट नहीं होगा. It's not that easy. You all have to look at so many different things and then decide. It takes time. But आ जाएगा समझ में. हाँ, because sir I remember आपका वो बहुत solid trade था, the way you kind of caught the reversal, और वो समय लाइव something new for us to learn at least. So सही था. ठीक है. So Nifty में again, like I said, swing trade wise, don't take any kind of a short trades. Okay. Look to take long trades above this line 16,845 के ऊपर. Obviously, look at the candle on which you are entering and keep your stops and stuff basis that. Yeah. Similarly, in this whole reason, यहाँ से अगर you see a reversal, look to short. Here, if you see, look to buy. Okay, below this, we'll look to change our view. Okay, so very simple. Okay, right now, since this range is big, I'm expecting more of a sideways kind of move. What I'm expecting Nifty to continue to do like something like this before actually breaking out. So this might happen for next 2 weeks, 3 weeks, this consolidation before it actually breaks out. Yeah. Clear? Any doubt?
So in this, in between the high and low of the range, there is no trade now. Intraday also, we cannot take any trades. Why you cannot take entry in intraday? इतना बड़ा रेंज है यार, पूरे ऑलमोस्ट 900,000 पॉइंट का निफ्टी में रेंज है, easily you can take trades. Don't get confused on time frames. 5-minute chart में very well you can get trades. Day trading, see a day trading and a swing trading and an investment, everything has different views. अब देखो ये डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट में व्हाट इट इज लुकिंग, ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, 1 2 थर्ड वेव आनी चाहिए, ए बी सी, क्लियरली ऊपर जाना चाहिए. सो योर व्यू विल चेंज बेसिस व्हाट यू आर लुकिंग एट. So you guys have to decide what you are looking at. Just give me a moment, guys. Let me connect the parcel. तो बताओ क्या डाउट है किसी को? Anyone, any doubt? What is the doubt you guys are facing here? Sir, I got it. मतलब आप जो बता रहे थे, हाँ, now it makes समझ में आ गया. चलो, anyway, कोई डाउट हो ऐसे डू आस्क, बट सिंपल देखो, बस यहाँ पे इतना अंडरस्टैंड करना है. काइंड ऑफ अ डबल टॉप, गोज बिलो दिस, लुक टू सेल, goes above this, you should look to buy. ठीक है, simple. What I am saying is mostly it will remain in this range. Mostly it should go down, will be in this range before it goes up. But at the same time, if it goes above last week's high, look to buy. ठीक है. Bank Nifty. So again, the Bank Nifty may be same. This was the support we discussed, came here, okay, gave a good reversal. Now this whole is a downtrend. This is just a sideways candle. So in this, what you will do again, this candle, ये जो last week की candle बनी है, इसके high से, if you see a reversal, you should sell.
Similarly, इसके low पे if you see a reversal, then you should look to buy. Similarly, a breakout above this will trigger a long trade. A breakdown above this, below this, will trigger a short trade. Very simple. ठीक है? Sir, is this a trap? So क्योंकि close support zone के ऊपर हुई. Trap in what sense? So like it broke 34,000 and then closed above. Like one day convincingly it was down and then फिर close ऊपर हो गया था. नो नो, मेरे को कोई ट्रैप नहीं लग रहा है. सिंपल साइडवेज मूवमेंट है और कुछ नहीं है. यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाई करना है. ट्रैप कहाँ है? स्मॉलर टाइम फ्रेम को देखोगे तो 34,000 जब उसने ब्रेक किया तो एक्चुअली वेंट अप टू 35,300. तो ट्रैप कैसे हुआ? ये भी गुड 1300 पॉइंट मूवमेंट. तो डेली पे लेसे सिर्फ एक कैंडल क्लोज हुई थी 34 के नीचे. तो इट ओपन ओवर हियर, राइट? देखो, यूजुअली ये ट्रेड तुमने कहाँ लिया होता? यहाँ पे लिया होता 33,300 पे. 33,300 पे लिया, क्लोजिंग अच्छी हुई, यू वुड हैव केप्ट इट. नेक्स्ट डे ओपनिंग कहाँ हुई? 35,500. अब उसके बाद जब वो गिरते जा रहा है एंड स्टिल इफ यू कीप होल्डिंग, दैट इज यू बीइंग स्टूपिड, that you are not trailing and booking. Market has given you money, you are not booking it, that's your fault. ठीक है. Yeah, so bank nifty पे guys देखो, again like daily chart खुला ही हुआ है, kind of a here you see a supply zone, see a good reversal on the daily chart. Below this you can take a short on intraday basis. Okay, goes above this, goes past this particular candle, you should take long for a target to 37,700. So again, depends where it is going. Okay, right now for me on the weekly chart, if I see just being sideways, my view will be sideways. What I am expecting bank nifty to do again is to be in this region again, just like nifty, before it actually shows any kind of a trending move. Yeah. सर एक क्वेश्चन है, ये वीक में आपने एक बैंक निफ्टी का जो एक कॉल का ट्रेड दिया था व्हिच वर्कड आउट वेरी वेल. सर एक बार उसका खाली साइकोलॉजी समझाएंगे क्या? लाइक हाउ कुड यू फिगर आउट अ 10 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड देन यू केप्ट ऑन ट्रेलिंग एंड ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर आपने बेचा. यार वो तो 5 मिनट चार्ट के बेसिस पे. हाँ सर, एक बार अगर इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू द माइंडसेट, बिकॉज़ आई एम श्योर ऑल ऑफ अस मेड मनी थैंक्स टू यू, बट अगर वो ट्रेड का जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे को ये बना बैंक निफ्टी, हियर आई कैन नॉट कीप अ 10 पॉइंट स्टॉप लॉस, राइट? बिकॉज़ ये 34,360 है, दिस इज लाइक 34 है, तो 300 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यार. 3470 से 34,370, 200 पॉइंट में आई कैन नॉट कीप अ 10 पॉइंट स्टॉप लॉस. सो हियर आई विल प्रेफर टू यूज futures to trade. But see something like here, double top has formed, entry I have got over here. Okay, here if I buy a put option, this is a very small stop loss, so here I can look for buying an option instead of a futures. Yeah, I can buy a put option here and keep 10-20 point of stop loss over here, and then just keep trailing until it comes. Right? वो एक्चुअली 10th मार्च का था सर. नहीं, I'm just giving an example. Okay, so when to buy an option, when not to buy an option depends on your SL. SL is small, I can look to buy an option. Yeah, SL is big, I look to buy in futures. Yeah, और specific trade ये वाली trade थी, यहाँ तक मुझे याद है. हाँ सर, एक बार ये वाली. हाँ सर, वही ये थी, मुझे याद नहीं है. 10th मार्च को सुबह 10 बजे आपने बोला था at 35,100 टू वॉच लिस्ट, और आपका एकदम मतलब क्लैरिटी अमेजिंग था. यू सेड दैट बाय देख लो ना, ये जैसे देख लो, यहाँ पे एंट्री अगर लोगे तो योर स्टॉप लॉस क्या कुछ नहीं है, 20-25 पॉइंट का है, मतलब ऑप्शन में वही 10 पॉइंट का होगा स्टॉप लॉस. एंड हियर यू कैन इजीली सी ट्रिपल बॉटम इंफॉर्मेशन, यहाँ आराम से ट्रेड लेने का. तो जितना बॉटम ज्यादा हो उतना स्ट्रांग है, राइट? सपोर्ट जोन. और ये बॉटम इससे भी तो कोइंसाइड कर रहा है स्टॉप से, इट्स लाइक ए वेरी गुड एरिया टू बाय. देखो यहाँ पे भी आपका सप्लाई जोन है, इधर आपका वो डिमांड हो गया, गुड एरिया, स्मॉल स्टॉप लॉस, टेक अ लॉन्ग,
in few options, keep trailing, make good money. और सर ऐसे जोन में if you get a good green candle, by good I mean like even if the size is small, it should be a clean green candle. तो बस आप नीचे वाले का stop loss बना करके आप ट्रेड कर दो. Yep. Ideally, in fact, the candle should be small ताकि अपना stop loss छोटा हो, right? हाँ मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मुझे छोटा ही स्टॉप लॉस चाहिए ना. हाँ, right. एंड ऊपर से आई एक्चुअली गिव यू गाइस स्मॉल स्टॉप लॉस बिकॉज़ मेरा खुद का लॉट साइज बहुत बड़ा रहता है. तो 10,000 क्वांटिटी में मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ ऑप्शन में. 10 पॉइंट इज लाइक 1 लाख का लॉस. अब वो ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाख का मैं 2 लाख कर सकता हूँ. 10 से 20 हो गया तब आई कैन वेट, बट नॉट बियॉन्ड दैट. सो दैट्स व्हाई I give small stop losses because it works for me also, and definitely it works for you guys. Sir, in this example that you're showing, जो आपने entry बोला, इसमें the green candle has a very long upper wick. Does that make any difference? No, it's a triple top, good to go long. Okay. Triple bottom, sorry. Yeah. Right. It's a reversal candle. This we'll anyway discuss in the second volume. All these reversal candles, type of reversal candles, and big hona, na hona. So there are two types of signal: good signal, bad signal. When is a signal candle a good signal candle? When is a signal candle a bad signal candle? But still you can take trades. So all these things we'll discuss in volume 2. Okay. But this is an entry, and that's where you get the entry. You make good money. Thank you. ठीक है. Anyway. Thing is simple यार. दिमाग लगाना पड़ता है इन्वेस्ट करने में. ट्रेड करना तो बहुत सिंपल होता है. Anyway, चलो बाकी सेक्टर देख लेते हैं. Pharma, as expected, last week we discussed, right? Today the channel might cross this, but you should look to go long. Walks like a charm. Gave this huge up move. अब इसके ऊपर अगर जाता है तो अगेन अब आपका क्या, यहाँ पे आप क्या ट्रेड लोगे? There is no point because already इसका टारगेट क्या होगा? upper side of the channel at max. Okay, so it can, there is no point taking a new trade. It is still bullish, but this is what it will do. Okay, so pharma remains bullish. Metal, last week we said that we'll not take any trade unless and until it crosses above this or below this. None of that has happened. Remain in this range sideways, but yeah, bullish. Still the same view. Your trade comes in play only above last week's high. Okay, so ये जब इसके ऊपर जाता है, then only you will look to take long. In this region, still metal remains sideways. Okay, I'll keep it bullish because mostly it should cross that. Okay, so look to take longs once it crosses that. Yeah, but right now it should not, only above last week's high. IT was a long, worked like a charm. This was the trade. I said that it will, like, expectation is it will go up mainly because of dollar, and worked again very nicely. So you see, IT was at this channel में देखो तो high पे था. Usually someone would, and यहाँ पे आपका supply zone भी था. Usually people would have given a short trade here, but the only reason I gave a long because dollar was looking good. So what I mean to say कि trading करने के लिए सिर्फ चार्ट वार्ट से ही काम नहीं चलता. You need to understand the economics and how market actually works. Okay, basis charts, basis price action and everything, you will look to go short. That's the trade you will take. But only because dollar was so strong, this buy call was given, and see how it worked. It worked like a charm. Most of the buy calls were in IT last week, and all have worked fantastic. So again, the view still remains bullish. Okay, and expecting this to now test the upper range before actually showing any kind of consolidation. Yeah, so IT mein view still remains bullish. FMCG, so FMCG में था, we expected कि अगर इसके नीचे जाएगा, will take a short. If you would have taken a short, you would have made money at some point. But if you would have not trailed it, you would be making loss. Now there is a good reversal. अब ये channel line की theory है, ठीक है. जब channel line cross होती है, नीचे जाती है, actually you should look for a reversal trade, and that's what it has played out here. Plus there was a
The point where it reversed from also had a good demand zone. So now this looks a bit positive. Any move above last week's high should trigger another up move. इसको अब हटाते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है. Now FMCG for me is bullish until this trend line. We'll then review here what happens. This also looks bullish. Reality में भी same इसके नीचे गया था. If you would have shorted, you would have made money. You would have left it, you would have made loss. So many examples, just focusing on one thing, that you should learn to trail. You cannot just be happy looking at your profits. At some time you need to trail or book them. If you just leave them, market will not leave it. People are out there to make money, and if you are not looking to book your profits, someone else will. See, this is the trend line, which is of importance right now. The reversal is from good area. Okay. This whole is a good demand zone from where it has reversed. Any move above last week's high should be taken as a buy. Okay. At the same time, if you see any kind of a dip from here, since the context is still negative, you can look to sell intraday. Yeah. This should be your trigger point. But right now, the idea will be to look for longs. Mostly that should happen. Finance, very similar to Bank Nifty. Okay. Again, another example where it went below this, would have taken a short, made good money. If you didn't book it, you would have made loss. So another example why you should trail and book your profits, not leave them. Okay, good reversal from a good area. Almost again looks like bottom is formed. This is a big candle. Okay, यहाँ पे अच्छा खासा रेंज है. इस रेंज के बीच में ही रहना चाहिए मोस्टली. अगर इस रेंज के ऊपर नीचे जिस साइड में ब्रेकआउट मिलता है, that should be the side you should take a swing trade. Within this, you should look to take intraday kind of trades. Yeah, sideways. Media also, जी देख लेंगे, similar structure है. And auto also. Yeah, this was the demand zone. Reversed from there. So now looks like again auto maybe bottom is done. ठीक है. ऑटो में व्यू क्या होगा? सेम. इसके ऊपर जाता है look to buy, इसके नीचे आता है look to sell. Within this, trade the extremes. Okay, that's what the market is telling us. That's what we have to do. सर ग्लोबल इंडाइसेस आपने बोला साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है. फिर क्रूड गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, गिर नहीं रहा बट लाइक वीकनेस है, दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव साइन. बस एशियन मार्केट्स बेरिश हैं, तो ऑब्वियसली सारी चीजें एक तरफ पॉइंट आउट नहीं करेंगी, बट हमारा मेजॉरिटी व्यू लाइक हर चीज का कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में भी ज्यादातर सेक्टर्स बुलिश है, तो वी शुड लुक टू गो लॉन्ग. Bullish नहीं बोलूंगा. I just say कि bottom formation is being happening. Either it is done, okay, or it is happening. Like for example, I said this is the zone. It's a big area. It might very well happen ना कि कल को एक कैंडल थोड़ी और नीचे चली जाए, वापस यहाँ आ जाए. Still, it will be like a bottom formation, right? बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट ऑफ फेज आ सकता है, कॉमन गैप्स या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है मोस्टली. ठीक है. अब इसके अगर ऊपर निकल जाता है, या विल लुक टू गो लॉन्ग. ओके, बट मोस्टली दिस वीक you might just see a little bit of sideways movement. ऊपर से एंड ऑफ द मंथ भी नहीं है, ठीक है. सो एक्सपायरी भी ऐसा नहीं है कि है, सो मंथली एक्सपायरी है नहीं, सो मोस्टली साइडवेज ही रहेगा. जो लास्ट वीक होता है, दैट्स वेयर यू विल सी अ काइंड ऑफ अ ट्रेंडिंग मूव बिफोर दैट, ड्यूरिंग दैट. ठीक है सर. Yeah, so again ये भी just like banks and all, auto में little sideways view. ठीक है, clear guys? Any doubt on the indices? Clear cut longs are this: pharma, IT,
FMCG reality. Okay. तो देख रहे हो कैंडल्स में डिफरेंस देखो. FMCG close at the top, reality almost close at near the top, metals almost close near the top, pharma close at the top, while auto doji, finance doji, nifty closed near the top. So this is good. This might actually end up going up. Okay. चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. 4:12 हो रहा है ना. 4:20 पे मिलते हैं 8 मिनट बाद. And then we'll continue on the stocks. Unless you guys have any questions. Clear on the indices, right? Yes, sir. Good. Chalo, then we'll meet at 4:20. Then we'll discuss stocks. And please guys use this discussion. मेरे को लग रहा है स्टॉक्स डिस्कस करके मैं खुद ही बस पैसा बना रहा हूँ, बाकी कोई ट्रेड तो ले ही नहीं रहा है. So use that also. Anyway, we'll meet in next 8 minutes. सर वो स्टॉक डिस्कशंस पे ही थोड़े बहुत जो भी बन रहे हैं वो उसी पे बन रहे हैं. मतलब सपने तुम कर रहे हो, बाकी जनता मोस्टली वो इंट्राडे में ही लगी हुई है. इंट्राडे में ट्रेड आएगा तो लेंगे, 5-10 हजार बनाएंगे. ठीक है, सबका अपना तरीका है. बट या स्टॉक्स आर बेटर वेज टू मेक मनी. You should at least try to do paper trading on them so that don't waste this webinar. What I'm trying to say, चलो नहीं ले रहे हो, डर लग रहा है, don't take trades, real trades. Do take paper trades every week on some of the stocks. At least what will improve is the way you select stocks and the way you enter exit. And once you are confident, then start taking. But the thing is, I see that people have completely ignored. They are totally dependent on intraday trades, which I am giving, which is not good. Anyway, to each their own. We'll meet at 4:20. Bye guys.
Hello everyone. Chalo, let's start with the stock. So HCL Tech was a buy last week. It remains a buy even now. You can enter before last week's highs. Daily chart खोलते ज़्यादा better दिखेगा. Yeah, so it remains a buy above last week's high. Yeah, look to buy above last Friday's high. Last week also it was a buy. Now also it remains a buy. Coforge reverse from the top, went down. Now it's at the bottom, almost like a double bottom. Yet you cannot buy it yet. Just leave it. इसको देखते हैं. So Coforge में I'm already there in Coforge. For some reason I'm still holding. I should have exited, but वो नहीं किया मैंने exit. वो थोड़ा सा फिर से लॉस बुक करो और क्या करोगे? ओके लेट्स सी. ठीक है, मैं मंडे शायद एग्जिट हो जाऊंगा. अभी काफी लॉस हुआ है इनफैक्ट. नो कमेंट नहीं. Mindtree. Mindtree again, yeah, nothing to do. Reverse from a support area, resistance area. So just leave it as of now. A long will be there only once it crosses, this red candle, which is at 42.30. So इसको भी leave. LTI again, just leave. Okay. In fact, you can take a short if it goes below last Friday's low. If it goes below last Friday low, you can take a short, but don't take a long yet. Okay, wait for the signal candle. Tech Mahindra, nothing again. Wipro again, nothing. Naukri में भी कुछ नहीं है. Emphasis looks good. Take a long above last Friday's high. Last Friday के high के ऊपर अगर जाता है तो good buy. Buy for a target here. Okay, just above the resistance zone 34.30 तक का target. LTTS again, LTTS में you just see here there is a resistance over here, right? There is a resistance over here. So if it crosses and there is a follow through, wait for a follow through candle. Say 5-minute candle, you see a break of this, wait for a follow through candle. If there is a follow through candle, then only go long. Okay, then only go long. Okay, so idea will be to look for long on a follow through candle. TCS, look to go short below this last Friday's low. Clear cut short है. Oracle, leave it. NP, leave it. NP will be a buy above this. Okay, above the red candle, it will be a buy. Metals. Vedanta is a buy above this green candle. सर एक क्वेश्चन है. The Infi में आपने बोला buy above the red candle. All these shorts will get trapped now. जिन्होंने यहाँ short किया, they would be holding for more downside. Right up till here. They will keep holding even when NP goes up. They will only exit once the price they have entered, that's taken out, and then you have a good fall you had seen earlier from here. So you should have a lot of people who would have shorted here. So if it goes over this, you can see a short covering. That's why about this. So sir, generally, yeah, go ahead. So I'm asking that generally buy above a red candle should happen if we feel that the shorts are getting trapped based on certain supply or भाई ऐसे ही नहीं आएगा ना भाई. ऑलरेडी ग्रीन कैंडल है, एक और ग्रीन आएगा तभी तो बाई अबव रेड कैंडल नहीं होगा. एक तरह से तो बाइंग अबव ग्रीन हो जाएगा ना. अच्छा करेक्ट, वो भी है राइट. वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बिना ग्रीन कैंडल आए थोड़े उसके ऊपर चला जाएगा. ठीक है. So anyway, Vedanta will be a buy above Friday high. National Aluminium is actually a sell below Friday low.
सर एक सजेशन चाहिए था इसमें वेदांता पे। वेदांता वी हैव वो पोर्टफोलियो में है, हाँ, बट keep लास्ट holding that. या एंड लास्टली वी हैव सीन कि वेदांता ने काफी कुछ मतलब पॉजिटिव ये दिए, तो इंट्राडे के लिए थोड़े इसमें वेदांता के लिए कर सकते राइट? Intraday के लिए कर सकते हैं. See, every trade starts as an intraday trade. या एग्री. Okay, so like at the end of the day, only you decide whether it is something worth keeping or not. Now, if I buy it on, I'll obviously not wait for whole day. The moment I see a 5-minute candle going up, I'll buy and I'll keep a stop loss. Get set, I'll exit. If it continues going up and say it closes over here, I will keep holding it because that's a good daily bar. But if it goes above and again comes down somewhere down the line, my trailing stop loss will hit and I'll get exited. So that will end as an intraday trade. Yeah. So every trade will start as an intraday. Whether it becomes a swing trade or not, that depends on the price action for the whole day. Okay. Because the reason I'm asking is mainly I personally focus on futures, but many times इतना margin नहीं होता है. So थोड़ा margin है तो intraday के लिए थोड़े quantity के में सोच रहा था मैं. No, don't buy stocks. An intraday stock में मत trade कर. It's not Okay. क्या फायदा हो? Stocks में trade करोगे 200-300 quantity में मुश्किल से 1000-2000 रुपए बनाओगे, उतना टेंशन लेके 400 रुपए अपना दे दोगे STT टैक्स और ये वो, फिर जो प्रॉफिट बना उसमें 30% ले दोगे. No point doing that kind of trade. Business has to be profitable, man. That makes sense. Thanks. So National Aluminium will be a sell below this Friday's low. Coal India, leave it. Sale is a sell. Sale actually मैं already short हूँ. I actually did not give you guys the sell call because lot size is big. Okay, but this I am already short on it. Okay. अभी मेरा stop loss इसके ऊपर है, which is a bit 3 रुपए के stop loss is a big stop loss in sale. Okay, so but anyway, new shorts can be taken below Friday's low. ठीक है, Friday low 99 के नीचे नया short ले सकते हो. पोर्टफोलियो में कैसा रहेगा सेल? नहीं मत डालो. I already have it actually. NMDC is good, but if you see here, there's a strong supply zone, right? See on NMDC, there's a strong supply zone. So what you should look to do, not to buy. Instead, you should look to sell if you see any kind of weakness once it reaches here. Okay, so just keep it in your watch list. Trade accordingly. Tata Steel is a sell below Friday's low. Hindalco छोड़ दो. Hindalco is good for portfolio just in case. Hind Zinc is almost at the support. So the idea should be to look for longs. If you see any kind of reversal, look to go long. Keep it in watch list. JSW Steel, nothing. You can take a long trade in JSW Steel, but again, you see, leave it. Not a very good trade to take. Jindal was a buy last week. Keep holding that. Okay. Don't take new longs, but it will remain buy. No new longs on this because it's near the top. But those who were bought last week, if any one of you at all, keep holding. APL Apollo भी buy था. Keep holding that buy. No new longs, but
Just focus on what I'm saying also with commentary. Don't only mark green, red because you'll get confused. Like APL, Apollo, Jindal, no new longs. Those who are already holding, for them it is good. Sir, I don't know whether there is any comparison or not, but is it good to keep Coal India and Tata Power both in portfolio? Coal India is a तुम पोर्टफोलियो किस चीज के लिए बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना तुम्हें Long term, सेफली like I'll forget it. नहीं लॉन्ग टर्म में क्या पर्पस है सबका अलग पर्पस होता है राइट यू मेक ए पोर्टफोलियो just to have normal returns 10-12% यार कोल इंडिया इज गुड अच्छा डिविडेंड ही दे देता है 8-9% तो डिविडेंड आ जाता है but if you are looking for making a portfolio which will give you 20-25-30% return or maybe 100% return in say 2 years or 3 Maybe years double, triple in 5-10 years. then you will not then Coal India is not the stock Coal India coal की business में whole world is looking at renewable sources of energy there is no fucking future for that company Coal India and Tata Power are comparable, right? और देखते हैं नीचे आते हैं जब तब बात करेंगे टाटा पावर एंड कोल इंडिया इज नॉट कंपेरेबल हियर टाटा पावर कोल यूज करती है कोल इंडिया कोल निकालती है जस्ट लाइक रिलायंस एंड एचपीसीएल रिलायंस तेल निकाल रही है एचपीसीएल तेल रिफाइन करके बेच रही है डिफरेंस चलो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस पे देखो ये बढ़िया डबल टॉप बॉटम आया था यहाँ पे लॉन्ग जाना था आई एम प्रीटी श्योर कोई गया नहीं होगा बट नाउ it will be a buy only above this red candle most of the auto stocks will be like this Bharat Forge is a sell सर बालकृष्ण में एक डाउट था क्योंकि लास्ट वीक यू टोल्ड कि अगर उसका लो जाता है तो यू सेल तो फॉर एग्जांपल आई डिडंट सेल बट इफ someone had sold और stop loss hit हो जाता और next day let's see वो high cross हो रहा तो सर should have मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं वहाँ पे should we have or should we wait? जस्ट तुमने एक ट्रेड लिया और फेल हो गया इसका तो ये थोड़े ना कि नेक्स्ट ट्रेड नहीं लोगे यहाँ पे जैसे इसके नीचे गया you would have taken a shot चलो इसका देख ही लेते हैं व्हाट इज द डेट 7 मार्च तो वीकेंड के बाद ये मंडे को खुला बिलो दिस यू वुड हैव टेकन शॉट हियर 1751 पे वेंट शॉट होल्डेड इट गुड कैंडल या हियर यू सॉ दिस कैंडल अ फॉलो थ्रू यू शुड हैव एग्जिटेड 1751 पे सेल किया 1708 पे 1710 पे निकल के 40 पॉइंट का प्रॉफिट अब नाउ तुम रखे रहोगे तो बात अलग है यहाँ you should have exited, taken a long trade now, and then you would have made good money. If you keep holding, that's your problem. That's why you have to trail. That's why you have to book profits. Trade, you also have to manage. You cannot just take a trade and leave it and forget it. ठीक है चलो भारत फोर्ज सेल बिलो फ्राइडे इज लो हमारे बालकृष्ण का क्या था वो above that red candle हमारे तो यहाँ है ना MRF क्यों छोड़ा हमने because it seems a good candle right not about that यार ऊपर ही तो यहाँ पे resistance है this line you can see 68-800 so not a good risk reward that's all okay got it सर एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग सर जैसे कभी आप स्टॉक्स में अभी आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं and when you look at weekly how do you decide to change the time frame on what basis like
अभी आप जो बता रहे हैं कि above Friday. See, I used to look weekly with you guys because you guys had not done the price action course. So मैं daily में समझाता, समझ नहीं आता. So उस समय weekly I was looking and telling you guys. Now since you have done the price action course, it's easy for me to explain you. So daily for me myself, I actually look at 4-hour chart, not even daily chart. Acha, so that can potentially. So as a teacher, you have to change things, not just so that people understand. ठीक Tube Tube investment. investment for long term. Tube नहीं, not a good stock for a long term. अब तो जाएगा ये भी 2000 तक. But वो 2000 के बाद जाएगा कि नहीं है, that I don't know. That I'm not sure about. So that's why I will not buy. So anyway, right now Tube investment is a buy above this. Friday's high. Okay. Similarly, it will be a sell also below Friday's low. Okay, both are there. So accordingly, you have to take the trade. Okay. Namara Raja buy above Thursday high. M&M again buy above this red candle. Sell below this green candle. TVS clear cut buy, definitely buy it. Okay, it's a very clear cut buy. You may already spill long. You can already see this arrow. I went long on Friday only on this. Okay, and if you see on Friday क्या हुआ? This red candle के ऊपर ही गया तभी I went long. जो कि अभी जैसे कुछ चीजों में बता रहा हूँ. It actually on Friday only went all that and I went long. Yeah. So TVS is a good buy. Bajaj Motors. Bajaj is also a buy. Above Thursday's high. Eicher में सेम रहेगा यार. बार-बार क्या समझाना. Exide, leave it. Boss is a sell. Boss I'm already short. Boss is a sell. New sell only below this point. Last week's low. अब यहाँ पे वीकली चार्ट काम करता, इसने डेली नहीं बताया, डेली में फायदा नहीं होगा, बट जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज वीक का लो ये है. राइट नाउ इट इज जस्ट साइडवेज. डेली चार्ट में अगर देखो तो इसी रेंज में. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वीक का लो के नीचे. अशोक लेलैंड सेल बिलो फ्राइडेज लो. सर एक क्वेश्चन है वापस. सर आप जैसे अगर टीवीएस में आपको कैसे कॉन्टेक्स्ट दिखा पॉजिटिव है? Because some of us are getting, at least I'm getting confused with identifying the context of the market. So, आपने This बोला was the bottom. Okay. Right, kind of a double bottom in place. Almost test of the extreme. Okay, trend line break. Continuation of that. यहाँ trend line break हुआ ना? Continuation हुआ. Minimum 1, 2, 3 बनाएगा. That's why I went long. Okay. तो मैंने कल एक वेव काउंट सेंड किया था ग्रुप में, आप देखे थे या नहीं पता नहीं. तो टीवीएस का ही. अच्छा ऐसा एक ध्यान नहीं दिया होगा. तो मतलब भाई उस वेव काउंट के हिसाब से लाइक मुझे लगा कि देयर माइट बी सम डाउनसाइड लेफ्ट. नो डाउनसाइड नहीं है, अभी ऊपर ही जाने वाला है. एटलीस्ट एक लेग तो और आएगा जितना ये रहेगा. So somewhere around 620 is where I am expecting it to go. 40 पॉइंट और ठीक है. ये सब हो गया. टाटा मोटर्स भाई खरीद लो अपने उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. ओके, टाटा मोटर्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू अगेन टच इवन दिस 377. ओके, इट्स now done. Buy it at least for your portfolio. Buy and hold it. Minimum you can expect 600 to 800 on Tata Motors on long term. Yeah, this is a long term buy. Okay, and then you can also buy it above Friday high if it goes. Second thing, how about Ashoka Leyland? Ashok Leyland is right now a sell, but long term wise it's good.
अशोक लेन मेरे पास बहुत क्वांटिटी है, काफी, जबकि मैंने बुक कर ली। मारुति जैसे बिलो फ्राइडे लो, हीरो, हीरो इज अ बाय अबव फ्राइडे हाई, बैंक देखो बैंक्स में भी वही है, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक ऑटोज, बैंक्स, एफएमसीजी, some will be buy, some will be sell. Axis is a clear cut sell below Friday low. सर हीरो की जो दो कैंडल हैं वो रेंज नहीं बना रही। आपने फ्राइडे हाई के ऊपर बाय बोला, बट थर्सडे की जो कैंडल है और फ्राइडे की कैंडल है, एक रेंज नहीं बन गई इन दोनों There की is a ब्रेक। trap people also no. So good buy 1 2 3, तीसरा अच्छा। वेव आना चाहिए। जस्ट एक दो वॉल्यूम और हो जाए तो ये सब भी समझ आ जाएगा कब लेना है कब नहीं। ठीक है। कोटक आईडीएफसी, जैसे इसमें भी तुम्हें लग रहा होगा, बट दिस इज आल्सो बाय, आईडीएफसी इज अ बाय अबव फ्राइडे हाई। ये सारी एबीसी मतलब 3 1 वेव 2 करेक्शन है जो, 3 हाँ उसके हिसाब से थर्ड आना चाहिए उसके बेसिस पर। There is a thing called as bar counting, which will study next volume, which will clear the concept. Volume 1 was just to give you an idea that it's so easy. Now there are also so many other things, okay, which will just help you increase your accuracy. Okay, we'll discuss that. If time milne dega abhi office, I have a lot of work. Let's get some time, we'll do that. Bandhan is a sell, guys. Below Friday's low. But अब एक चीज ध्यान रखना, बंधन is not a very good trade to take because this was the bottom from where you see a kind of a double bottom in place. So one should actually avoid, and if you take a trade, restrict yourself to an intraday kind of a trade rather than taking a swing trade, even if it closes you, because it will be just at the support. So you have to keep all these things in your mind when you are taking a trade in which order. Third bank will be a buy above Friday's high. सर एक और क्वेश्चन है, जैसे जब आपने टाटा मोटर्स का बोला तो डू यू आल्सो हैव अ फंडामेंटल बायस टुवर्ड्स इट? बिकॉज चार्ट्स में भी अगर उतने नहीं भी लगे, बट जैसे सिंस आप फंडामेंटल्स भी स्टडी करते हो तो आपने बोला 700 800 जा सकता है, सो like do you mix fundamental and technical, and if yes, No, is that in trading fundamental has no bearing in trading, because Tata Motors, see, trading is about time, right? investment is not about timing. Tata Motors, when I'm saying 800, I'm not saying ना कि अभी मार्च में जाएगा कि अप्रैल में जाएगा, it's very easy to say that, right? Because वो पता है कि हाँ 800 जाएगा, कब जाएगा ठीक है, मे बी जो इस साल नहीं अगले साल जाएगा, अगले साल जाएगा. There is no risk because there is no time boundary you are keeping. But trading is something of futures खरीदते हो, option खरीदते हो, you have an expiry. You have to be very correct on when to enter, when to exit, and all those things. Investing is easier on that front, but investing में दिक्कत तब होती है क्योंकि investing में people put a lot of money in investing में people actually don't realize when to exit, which you have to continuously check every quarter and understand. So time is, a lot of time is there, so different way, but how you invest has no, like bearing on how you trade. Those are both very different things. AU Bank is a buy, guys, above Friday's high. SBI and clear cut range, both dozy candles, so buy will be above this, sell will be below this. Okay, sideways. एक तो पता नहीं मेरे को कैडिला क्यों नहीं दिख रहा है. Anyone else is facing this problem? सर उसका नाम चेंज हो गया ना. क्या हो गया? Zydus हो गया, Zydus. Zydus हो गया. ओके, तो कुछ नहीं पता रहता है. मेरे को I don't at all listen.
तभी मैं सोच में कैडिला डाल रहा था, लेकिन यार फ्यूचर्स में कैडिला ही दिखा रहा है। आई शो यू, सी इफ आई पुट हियर कैडिला I'll see nothing, but if I show put in futures, then I get it. I don't know why is it that. That's why I never even thought कि नाम वाम चेंज हुआ रहेगा. तो मे भी ऐसा होता है ना कि मतलब नाम चेंज होने से पहले ही फ्यूचर स्टार्ट हो जाते हैं 2-3 महीने बाद। सर अगली एक्सपायरी पे नया नाम आएगा ना। अच्छा ऐसा है क्या? I don't know यार, मे बी होता होगा. चलो ठीक है, जाइडस करके इसको ऐड कर लेता हूँ. I never knew this. क्या नाम है? जाइडस. ZY. ZY. इसका फ्यूचर दिखाएगा. Good. भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है. I was like so confused. बताओ. Dr. Reddy is a buy above Friday's high. Lupin is a buy above Friday high. Cipla is a buy above Friday high. सर सिप्ला को लेके एक डाउट था. डाउट नहीं एक्चुअली, एक सर फ्राइडे को सर 15 मिनट पे एक बार ये चार्ट खोल दो. So Friday को first candle was a bearish 5 minutes candle. you want. 15 sir. Trade in 5 minutes, don't trade in 15 minutes. You'll have much bigger stop losses. So इसमें the first candle was a bearish one. तो मैंने वहाँ शॉर्ट लिया था 970. नहीं. शॉर्ट तुम्हें या तो यहाँ लेना. This was the signal candle, double top signal candle. You could have taken short over here, carried that short. But if you did not take short here, this is not the candle to go short. But यहाँ पे I saw supply zone last 3 times से यहीं से reject हो रहा है. Then pharma index तो यहाँ पे था was ना शॉर्ट. bearish. ये सिग्नल कैंडल थी, ये तुम्हारा ट्रिगर था. नॉट हियर. सिग्नल कैंडल यहाँ पे तो कुछ सही नहीं ना. यहाँ पे शॉर्ट नहीं लेना था. अगर यहाँ पे तुमने शॉर्ट लिया तो हाँ, you could have carried. And after this candle was formed, you would have been cautious, and the next candle, the moment you saw a follow through, you should have exited. Okay, this is where you should have gone long on this candle. ये जो छोटी candle दिख रही है, or at least if not this big candle जो कि इसके ऊपर गई. तो वो छोटी कैंडल पे क्यों? Reason? Because there is a follow through ना. This candle was a reversal. This showed yes there is a follow through, and this confirmed it. So but मतलब overall context is कि वो एक supply zone पे 990 something was its all time high. The 3 बारी Three test candles are bullish in nature. It's a bad signal, but a good entry. Good risk reward. So this trade has to be taken. कहाँ था? इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे, डे लो के नीचे. Anyway, तो पढ़ेंगे. Don't worry about these things will learn. सब आएगा, थोड़ा सब्र रखो, सब आएगा. और फार्मा लीवेट कैंडिला. So this will be a buy of Friday's high. कैडिला लॉन्ग टर्म में कैसा है सर? नहीं, फार्मा कोई स्टॉक मत खरीदो लॉन्ग टर्म में, सब बेकार है. सर आपको एज अ सेक्टर which sector is looking most promising for long term? जैसे आप metals, autos, banks, फाइनेंस में भी तुम्हारा इंश्योरेंस. Sun Pharma is good again, buy over Friday high.
मतलब मेरे को याद है मेटल्स आपने पहले भी बोला था, इनफैक्ट इन जनवरी यू हैड सेड दैट फेब्रुअरी एंड के बाद मेटल्स बहुत भागेगा. And metals were the only sector which did good. Correct, Now correct. this fall. But much before all this war and all happened. Biocon is a sell. सर बायोकॉन अब इतना देखो बायो यार बायोकॉन में थोड़े पैसे बनाए हमने, बट वो डर रहा था क्योंकि इतना इतना ह्यूज वो गिरा. यार तो डरना तब चाहिए ना स्वप्निल जब लॉस कर रहे हो. जैसे loss कोफोर्ज में तुम्हें डरना चाहिए था कि इतना गिरा फिर भी रखे हुए हो. डर वहां होना चाहिए जब पैसा बन रहा है, तब तो ना डरना चाहिए, तब तो ट्रेड करना चाहिए, है ना. ये तो गिर रहा है, अच्छी बात है, यू शुड बी हैप्पी. पैसे बनाए हमने, बट वो और गिरेगा ऐसे लग नहीं रहा था, बट वो और गिरता ही चला गया. You have to change your thinking. Trend, like I said, na, market has momentum. Momentum is an inertia. Market keeps doing that what it is doing, and that's why when you are making profit, you should learn to trail, because market will keep going up. You will make money. Similarly, when you are making loss, you should exit, because market will keep going opposite, and you'll keep continuing making loss. Yeah. Right. Yeah. Anyway, so Biocon में guys देखो यहाँ पे you can sell, but again you see here there is a good support. We talked just about movement of inertia. You see there is support work very near to that zone, so it's not good trade to take. So you can take a trade, but it won't be a good trade. Sir, even we say in Biocon 10 points, futures के लिए Biocon 10 points is huge money. Yeah, so मतलब वही है, अभी तो हम डेली चार्ट देख रहे हैं ना. So for me it is not a swing trade, yeah, and you can make a good amount of money in an intraday. If it goes below this, sell it, but yeah, you should look to trail it tightly. वो जैसे 320 के नीचे 328 के नीचे गया तो it can come very well to somewhere around 320. 8 point you can make, but I will not consider it a good trade, because 8 point बनाने के लिए almost I'm risking also 8 से 9 points, so not a good risk reward for me. और यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं देगा in case it comes below that. सपोर्ट देगा 5 मिनट कैंडल में एक बार एक दो कैंडल तुम्हें दिख सकती हैं, you know, green, but it will continue because of the momentum, as you say. Divi's is a buy above Friday's high. Alchem is a buy above Friday's high. So almost farm काफी सारे buy हैं. Just look at the risk rewards and accordingly take trades. Yeah. FMCG. Yes, sell below Friday low. बताओ ये देखो, मतलब this is called irony. Trend upward, एक कैंडल साला ग्रीन नहीं है. गैप अप नहीं हो रहा है, जो पूरा बाइंग सुबह हो जाता है. एग्री, एक भी ग्रीन नहीं है. द ओनली थिंग इज जो दो बीच में है, जो दोजी जो है एकदम शार्प दोजी, तो ये पैटर्न भी समझ सकते हैं ना. इसमें कुछ नहीं, ये क्लियर. अब ये इसमें बस वही है, हायर टाइम फ्रेम इट्स ए गुड, देखो इट्स ए गुड अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग ओनली, नथिंग एल्स. इट्स एक्चुअली a sell. So on this Britannia, you see Friday lows going, sell it, but like you see, you have to be very cautious in trailing it. Godrej CP, nothing. Jubilant Food, very good buy. VBL, nothing. Marico, nothing. VBL, nothing. Robert, no. Nothing. Robert the business छोड़ दिया, channel के just pass था, इससे I just left it. Grazim, फिर देखो ये this is also buy, but there is a
resistance, so just leave it. Havels sell below Friday's low. Nothing. ITC. Now the ITC is again reaching its supply zone. Now what is the context? Very bullish. Almost every candle is green. So if you see it breaking this trend line, will you sell? No. You will wait for it. If you see this trend line break, you wait for a test of extreme. You sell on the second candle. Second entry. Okay. Voltas, nothing. Voltas may actually you can take long. I sell this, target will be this. This is the reason in which Voltas is sideways there. Sir, ITC में it is already a test of the extreme. Why should we wait for second entry? Because this is green candle, na yaar, abhi how? Why will you sell right now? How The do you know prior it will bull not trend continue? is so strong. You want to enter on the second entry. Yeah, you see the context. It is very bullish. हर candle साला वो भी daily chart की बात कर रहे हैं. Yes, sir. Yes. Pidilite, nothing. Compal. Target Palmolive. This will be a sell below Friday's low. अच्छा बैटमैन देखी है सबने? देखी किसी ने बैटमैन? Sir, heard is very nice. यार देखनी है मुझे, आज जाऊंगा मैं. गजब बिजी था, आज जाना है बैटमैन देखना है. गुड राइट? Batman मेरा थोड़ा मन उठ गया, डीसी देखने का मन नहीं करता. तो यूबीएल विल बी अ बाय अबव दिस रेड कैंडल गाइस. नाम नहीं छोड़ दो. Nestle page. Data. Method इसमें जी just sell below Friday's low. Look, this is like a test of extreme. Sell off, but still no red candles. Very green, right? All of it. So again, here also you'll do nothing. Wait for a red candle to come. अब ये 5-minute chart में हो सकता है, तो मैं already entry मिल गई हो PVR में. Let's see. See, already you got an entry over here on 5-minute chart. Got an entry here. जिसका पैसा बना होता, should have kept it, stop losses of hit हो जाता. Got again an entry here. ठीक है, इसके just नीचे you should have kept. Already PVR में you should be short. अब वो daily chart में आपको नहीं दिख रहा है. And ये closing कहाँ हुई? एकदम यहाँ पे. Should have kept that as a swing trade. So it started as an intraday trade. You could have kept it as a swing trade. Anyway, we will learn all this. ठीक है, कैसे how to see things in different time frame. There are certain rules. We'll share that. A bit of a reality. छोड़ो इसको. ठीक है, क्या जाते हैं इसको दिमाग खराब हो जाता है. DLF. So DLF is also looking good, guys. DLF. अब देखो, right now this candle, if you see, this is in a range of this particular, right? DLF
Still a buy, all are these bullish candles, but a new buy one should take only above this. Okay. So, but shouldn't we consider that support to be a resistance now? क्या चीज? ELF में हाँ. support zone था. Should we take it as a resistance? हाँ, but इसके ऊपर जाएगा तो you'll get now this is 5 minute entry low. If that doesn't work, your stop loss will get hit. Okay. Right. You'll enter only on that 5 minute candle which will. एक मिनट यार. हाँ हेलो दी. यार अपने बच्चे को ले जाओ यार यहाँ से. Getting worried. मेरी मेड नहीं गई है अभी घर. दूसरे घर पे काम चल रहा. लेके जाओ इसको. She is not here. I'm getting trouble. Take him. रख रहा हूँ मेरे को इस काम में. आओ लेके जाओ. Good. LMT guys will be a buy. Okay, it's a bit risky, but it's also a buy. Okay, it's just like a 1, 2, 3 should come. Minimum it should go to 1827, 1830. Okay, you can look to buy. It will be a bit risky, so you can hedge it. But yeah, you can buy it above Friday's high. Okay. सो जब आप ABC देख रहे हो, जैसे काफी चार्ट्स में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें एक रेड कैंडल इज आल्सो गुड इनफ फॉर B, like 1, 2, 3, not ABC, sorry. No, one red candle. How do you know? Exactly. तो अभी तक जितने भी हैं जो मेरे को रेंज बाउंड लग रहे हैं, जैसे थर्सडे फ्राइडे में रेंज बाउंड है, उसमें आपने कहा कि फ्राइडे के ऊपर ले लो. नहीं, अब इसमें देखो ग्रीन आ गया ना, तो हो सकता है खत्म हो गया हो. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर सिर्फ रेड होता, ये नहीं होता ग्रीन, तो मैं नहीं लेता. अच्छा, तो इस केस में जैसे रेड के बाद ग्रीन बना है, इसलिए आप कह रहे हो कि हाँ, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि हाँ, इसके ऊपर अगर जाता है तो कंटिन्यूएशन मिले, देन इट सपोजिटली दिस इज ओवर, बिकॉज़ स्मॉलर टाइम फ्रेम में माइट बी दिस होल मूव वुड हैव बीन 1, 2, 3 दिस टू कैंडल्स. ठीक है, तो जब रेड है तो बनने दो, जब फर्स्ट ग्रीन है तब सोच सकते हैं ना. एग्जैक्टली. देखो इट्स वेरी पॉसिबल कि एक और रेड आ जाए, 1, 2, 3 ऐसा हो उसके बाद. इसीलिए आई एम सेइंग कि यू बाय ओनली अबव दिस, बट देन यू सी अ कंटिन्यूएशन. तो वही बात हो जाएगी ना कि कंटिन्यूएशन हो गया, मतलब रनिंग है. यस. And then PFC will be a buy of Friday's high. But the PFC is not a good trade, guys. Okay, because this whole zone you see, this is a supply zone. So just keep all these things in mind when you are taking trade. SBI Life is a buy of Friday's high. PL very big red candles, so I'll avoid taking any trade here. एक क्वेश्चन है, जैसे आप जब बोलते हो कि बाय अबव दिस हाई, और जैसे अपने 5 मिनट कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, 5 या 15 whatever, so then potentially the risk reward is damn good, because with the 5 point stop loss in stock futures you can go up to riding maybe 40-50 points, so more than 1:10 type हो गया, right? Yeah, that's why I make money now. नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी तक ये कभी ट्राई नहीं किया, बट ऐसा होता है कि बस वो 5 के बाद ब्रेकआउट देने के बाद it never comes back to that level, or for that matter even it doesn't get traded. जैसे आपने बोला वो swing trade starts with a 5 minute but ends up becoming a swing. मतलब is that, do you experience it? That is what always happens. See, why this strategy of mine mostly works on a higher time frame. If you see an uptrend, for example, let's take this one. Okay, I'm not giving this trade, but I'm just giving an example. Higher time frame daily में the market is in a clear cut uptrend. Okay, ignore right now, देखो इसमें वो है, ऊपर resistance है, हम just ignore that as of now. Okay, just trying to explain.
higher time frame, I have a good uptrend. On a Okay. smaller time frame, I enter on a 5 minutes. Since the market's momentum is on upside, mostly that 5 minute breakout will work. Okay, and that's why my stop losses doesn't. And if even if they get hit, it's a very small one, so it's fine. But if it doesn't get hit, I end up making almost how much equal leg. So यहाँ पे अगर जैसे 2050 तो कितना है ये 2290, तो ऑलमोस्ट 50 21 190 और 50 आपका 240 पॉइंट्स मिनिमम। मैं 5-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 240 पॉइंट का प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन सर आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि इसका कॉन्टेक्स्ट अप ट्रेंड है? पर्सनली आई एम गेटिंग स्टक ओवर देयर जस्ट बिकॉज़ फॉरगेट दिस राइट नाउ ना। राइट नाउ सी 5 मिनट चार्ट पे मैं देख रहा हूं तो व्हाई वुड आई लुक एट ऑल दिस यू नो पूरे महीने का। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस पास्ट 4 और 5 डेज। अच्छा हां राइट क्लियरली अप ट्रेंड। हां 5 मिनट में तो पिछला उतना करेक्ट उतना डेटा में क्लियरली आएगा। राइट राइट 5 मिनट के लिए मैं देखूंगा तो ऐसे ही दिखेगा ना यार। This is how it is, upward sideways, right? Upward sideways, this is how it is. Why would I am bothered about seeing all this? इतना मुझे देखने की जरूरत नहीं है। और सर आपने कैसे निकाला करीबन 200 पॉइंट का प्रॉफिट तक मिल सकता है? मतलब हाउ डिड यू इक्वल लेग कम बोलते हैं वो, we'll discuss later in other volumes. हां मुझे वो नहीं आता। So in this single trailer also in the 5 minute only. I cannot hear you properly. I'm saying trailing भी 5 मिनट पे ही होगा। हाँ मैं ट्रेल करूंगा 5 मिनट पे। एक बार अर्ली बन गया तो फिर अर्ली पे ट्रेल करूंगा। ओके या फिर उसके बाद 4 घंटे पे करूंगा। फिर एक बार डेली में क्लोजिंग होगी फिर मैं डेली में भी करूंगा। इसको डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है, कहानी कैसी चल रही है। यस सर LNT और PEL दोनों में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बन रही है, पर आपने PEL को बोला कि मत लो और LNT में बोला आप ले लो फ्राइडे के ऊपर। उसका क्या रीजन है? और PEL दोनों में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे आपने कहा रेजिस्टेंस है पास में, है ना? हाँ लेकिन आपने PEL बोला छोड़ दो, आपने कहा LNT LNT का ले क्योंकि लो। मेरे को क्या बोलते हैं LNT में अगर आप देखो रियलिटी इज पॉजिटिव। अच्छा सेक्टोरल। व्हाइल PEL में क्या है साइडवेज है निफ्टी फाइनेंस। अच्छा So that's the reason I was like more inclined to take a trade in a reality stock rather than PEL because of the whole sector. वैसे दिस वीक तो मतलब फार्मा और रियल्टी में जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बने वो हमें प्रेफरेंस देना चाहिए ना। देखो फार्मा में you have to just note one thing that your reward is now limited. वो चैनल का टॉप। हाँ so only take trades when you have a good risk reward. Okay, reality is good. Okay, metals are looking good if they break out. Okay, no upward limit actually on metals. Okay, so sector also you have to keep in there. So many things यार, वो सब मिला जुला के एक बनती है कहानी। नहीं वो एकदम सेम सेटअप लग रहा था तो मैंने पूछ लिया ये रीजन क्या है। अच्छा किया क्योंकि मैं ऐसे बोलता भी नहीं। Sometimes I just assume. सर एक चीज अभी जो आपने बताया सर कैन यू हियर मी? या टेल मी। हाँ सर अभी जो आपने बोला दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच आई नेवर थॉट ऑफ कि एक बार 5 मिनट पे अपने ट्रेल कर रहे हैं एंड वंस इट स्टार्ट गोइंग देन मूव ऑन टू अ हायर टाइम फ्रेम। दैट इज एन ऑसम वे ऑफ डूइंग इट। कभी वो पता नहीं था। सो दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट ना सर। That's how you should do, but no one does that. I don't know why. सर कभी मुझे तो पता ही नहीं था। आज फर्स्ट टाइम ही किसी ने बोला वो आइडिया भी आया बट नाउ दैट यू सेड इट वी कीप इट इन माइंड ऑफ कोर्स। The people actually always look at different candles to take trades, different time frames. मेरे लिए वो ऐसे नहीं वर्क करता। I always, like I said, for me every trade starts as an intraday trade. It's only by the end of the day that I make a decision whether it is a swing trade or it should be an intraday trade. But everyone has a different way of. Few people trade keeping in like. अब जैसे मेरे को जब डेली चार्ट में 5 मिनट कैंडल में रिवर्सल दिख गया, वाई वेट की नहीं वो डेली चार्ट में साला दिखे तभी जाके मैं एग्जिट करूंगा।
No point doing that. Why would I risk so much money? Got it. फिर आप एनालिसिस बिगर टाइम फ्रेम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम करते हो और एंट्री स्मॉलर टू बिग पे शिफ्ट करते रहते हो, है ना? Yes. These are all flags, so that's why leaving it. L&T Financial Holding. Good buy. This you can buy above Friday's high. इसको भी कर सकते हो. ऑलमोस्ट देखो सिमिलर पैटर्न्स हैं. लाइक अब इसमें वही है, देखो रिस्क रिवॉर्ड. ये भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा ये कैंडल बड़ा है, सो इग्नोर करो. Bajaj Finance, by the way, guys, I am hoping you guys have that in your portfolio. Please hold it. Okay, it will definitely double in next 6 months. M&M Finance. Chola. देखो चोला में I have already long. I will look to exit actually now, but it is looking very good as of now. Just because of this rounding top, I'm not feeling confident about giving a buy call here. Let's leave that. बहुत सारे other trades are there. बाकी देखते हैं. Granules 1, 2, 3 done. Leave it. Club. फिर आपने कहा 1 2 3 डन, 3 का डन कैसे पता है? वो इक्वल लेग्स की वजह से फोन में आ रहा है, बराबर हो गया है. प्लस ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है. वो आ जाएगा. देखो थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा ना, तो वो दिख जाता है, अचानक से समझ आ जाता है कि कहाँ पे है. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि आपने देखते ही बोल दिया तो कुछ किस बेस पे बोला. ऊपर से ये भी देखो ना, लास्ट के अंदर कितनी बड़ी है. मोस्टली बिगर मूव्स कम एट द लास्ट, जस्ट टू ट्रैप. नहीं, आपने वो वॉल्यूम वाली चीज बताई थी ना, तो यहाँ पे वो कैंडल को देख के लग रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी है, तो इट्स अ गुड टाइम टू एग्जिट. नहीं देखते हैं, बट हाँ देखो वॉल्यूम भी अचानक से बहुत ज्यादा है, प्लस ऊपर से रेजिस्टेंस है. यू शुड बी मोस्टली अवॉइडिंग कर. इसको छोड़ना चाहिए, ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए. नॉन पैथ क्लब till Hill is looking like a good buy, but इसमें correct होना बहुत जरूरी है. आपका बड़ा हो जाता है, छोड़ दो इसको. Tata Chemical is a buy, guys, above Friday's high. सर जैसे हाँ सर, एक क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू, जैसे अभी आपने बोला टाटा केमिकल बाय अबव फ्राइडेज हाई. सर फॉर एग्जांपल इट गोज अबव फ्राइडेज हाई, वी एंटर ऑन अ 5 minute, we get stopped out, but then again it starts moving above Friday's high. Then do we again enter, or then do we leave the trade? So it's a more conceptual question about whether the first move is important or whether any move above Friday's high is important. नहीं, it's about first move और second move के बीच में क्या हुआ. Firstly Friday high के ऊपर गया, for example, right? यहाँ पे गया ऊपर, failed, came down, again went there. So now it is making a kind of a triple top kind of a thing. I'll be more inclined to sell it. But say if it breaks above this, gives a continuation, I'll go long again on the continuation. It depends how it is happening. It's not a general statement कि जितनी बार जाएगा उतनी बार लेना है. Similarly, अब जैसे for example, कई बार क्या होता है, गैप अप हो जाता है, then you guys are like confused कि already इसलिए तो इतने ऊपर खुला, अब क्या करना है. तो ऑलरेडी अगर से यहाँ पे खुला, but there is see a green candle and then a continuation, continue long. What else? Instead of entering here, you are entering here. That's fine. अब इस पूरे मूव में जो यहाँ से यहाँ आया, चाहे आप लॉन्ग इसके ऊपर लो या लॉन्ग इसके ऊपर लो या लॉन्ग इसके ऊपर लो, पैसा तो बना ही ना.
हाँ right sir, got it. Glenmark is also along above Friday's high. Ambuja छोड़ दो, तो है MGL, IGL, MGL actually sell किया जा सकता है. 1, 2, 3 done. You can sell it below Friday's low. Okay, but इसमें ध्यान रखना ये थोड़ा एक trend line है, so risk reward wise just keep then check by क्या अलावा it is a good sell. IGL is also a sell below Friday low. Indigo is a definite buy above Friday's high. Indigo खरीद लेना, भूलना नहीं. छोड़ दो, buy छोड़ दो. buy भी खरीद सकते हो, leave it. बहुत सारे ट्रेड हुए हैं. The buy is Yeah. Yeah, go ahead, tell me. buy के लिए buy है, right? Buy Industries. Yeah, you can buy it. Good up Short move, उसमें. बढ़िया consolidation, up move is actually good buy. Okay, so if you want you can buy. मैं नहीं करूँगा, मेरे already मैं खुद भी लिखता जाता हूँ क्या क्या मुझे लेना है. Petronet, Gujarat Gas, Pfizer, Torrent Power. Torrent Power is a sell. Clear cut sell below Friday low. Okay, triple top, बढ़िया resistance, बढ़िया candle, closing at the bottom. Nothing like it, just sell it. Deepak Nitrite is a good buy over Friday's high. SRF is a sell below Friday low. सर आप जब स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं, do you take on 5 minute or 15 minute? क्यों अपना स्टॉप लॉस बड़ा करूं? अच्छा 5 minute ना सर? I believe in buying huge quantity. See, like people do pyramiding. I don't do pyramiding. I don't believe in pyramiding. Instead, I buy once and for all पहले ही ज़्यादा and I look to exit. So that's my way of trading. Usually how people trade is that every consolidation they add on to their position. I don't do that. Most of the time my way of trading is कि खरीदो पहले ही 20 लॉट, पहली बार में 10 निकलो, फिर 10 का आधा निकलो, फिर उसका आधा निकलो, ऐसे. This is how I trade. Usually people trade in a way कि पहले खरीदते हैं 2 लॉट, फिर उसमें और ऐड करते हैं. I don't believe in that. That is good for me in investing, but not in trading. Trading में I don't believe in pyramiding. I prefer the other way around. Start big. गलत हुआ तो ठीक है, एक बार में लॉस होगा, सही हुआ अच्छा पैसा आएगा. Trend, look for a reversal. बढ़िया इधर सप्लाई जोन है, रिवर्सल्स आता है, look to sell. वॉच लिस्ट में डालते हैं इसको, कोई ट्रेड नहीं उसमें. आरती नहीं, nothing, leave it. Siemens, IOC बाई था लास्ट वीक, अच्छा पैसा बना है इसमें, अभी भी बाई रहेगा. ठीक है, वो फ्राइडे आई, बट अब आपका टारगेट यही है, सो जस्ट बी कॉशियस. 5 रुपए का बस टारगेट बना है. लास्ट वीक अच्छा था. भेल छोड़ दो, भेल को. नाम इंडिया विल बी अ सेल बिलो फ्राइडेज लो. मन्नापुरम Veil wasn't a buy. नहीं जी, भेल के ऊपर रेजिस्टेंस है, जस्ट यहाँ पे leave it. Because it's making a higher low, higher high. Yeah, but leave it. हो गए हैं उसके रेजिस्टेंस पे भी है. रिलायंस छोड़ दो. रिलायंस एक्चुअली लॉन्ग ले सकते हो, बट पता नहीं, आई डोंट फील लाइक टेकिंग. कैन बैंक leave it.
IRCTC, CUB में देखो रेंज है, जिस साइड निकलेगा उस साइड निकलेगा, जिधर साइड ब्रेकआउट हो उस साइड लेने का। CUB को PPCL looks good but at resistance so we'll ignore it. ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है उधर, nothing. BL already you should have sorted. BL here should already be short. If not yet, you can still go short below this candle. Will be a sell. Airtel is also a sell below Friday's low. Comments nothing. Tata Power छोड़ दो, ये भी रेजिस्टेंस वाले जोन में है। Leave it. Apollo Tyre looks good but leave it. ये मैं वॉच लिस्ट में रखता हूँ, आई टेल यू गाइस लेटर ऑन। कुछ आया तो छोड़ दो, और ये छोड़ दो। It guys, nothing Indian hotel में कुछ नहीं करना है, leave it. Mostly it will be a sell, but as of now nothing. सर एक जनरल क्वेश्चन है अबाउट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे वेयर ज्यादा मूवमेंट आता है, जैसे मॉर्निंग और 1:30 बजे के बाद, 11 बजे से लेके 1 बजे तक कुछ नहीं होता है। ओके, और सर जैसे 1:30 और 3:30 में भी आप कांस्टेंट एक्सपेक्ट करते हैं? You cannot keep exact time कि 1:30 है कि 2:30, 12 बजे भी हो सकता है, 12:30 भी हो सकता है, बट जनरली 11 से 10:30 से 11:30, 12, 12:30 के आसपास you generally won't find anything. अगर if it is a sideways day, then that would be the place where mostly nothing will happen. If it's a trending day, it doesn't matter कि 10:30 बज रहे हैं कि 12 बज रहे हैं। The trending day का मतलब हो गया कि each hour का high has to be higher than the पहले वाले hour का है। Yes, on the time frame you are looking. And so generally अगर अपने बोलते हैं first hour high या I'm just telling you term which I have read online. So first hour high को 10 बजे तक है, right? Abhishek, I couldn't hear you here. There is a lot of some air or something. Oh. तो ठीक। मैं पूछ रहा हूँ कि if we take the first hour high or low of Nifty, तो that first hour high or low means 10 o'clock या कुछ, क्या कि first hour में जो reference points बने हैं? नहीं, nothing. You forget all that first hour theory and doesn't matter. अच्छा ठीक है, okay. और ये सारी चीजें जो है ना फर्स्ट आवर, मेरे को समझ नहीं आते लोग, why don't they follow the basic, why complicate? Instead of looking first hour of Nifty, Bank Nifty, why are you not looking at the entire context? Just limiting your first hour is what? Just kind of giving you a context, right? First hour के ऊपर गया, so why am I actually shortening my view and context to only that particular 1 hour? What happens before that? Why is that not important? So that's why people go wrong there, and it works also sometimes, but it is not the way to trade. You have to look at the entire context, not about only the first 1 hour what it is happening. So one request, sir, a lot of us are facing issues, especially me, I'm facing a lot of issues with respect to context. I do intraday Nifty. So if you could help us only with the context, not maybe particular trades, but with the context, regularly, that would be very helpful, sir. Context it will help us simple to understand. Like you tell me an example, I'll just give you. Like see, for example, right now this chart, if I'm saying, what is the context? Sideways. Exactly. So what is the difficulty? अगर से morning में यहाँ पे start हो, for example, this has not formed. चलो यहाँ तक ही हम say we start here. We don't know right now. But why it is difficult? Right now also, if you see, it's very clear now. This is, unless and until this goes, it is sideways. As simple as that. The rest things will happen later, but right now also you can say, yeah, this is the context. Yes, sir. Market is sideways, and the only thing that you need to do here is sell below this.
इसके नीचे गया, you need to, जैसे ही इसके नीचे गया, you need to sell. And this is your target. Lower यहाँ पे आ गया, खत्म, निकलो. Right? Yes, sir. It's very easy. I don't know why you guys are having trouble with that. नहीं but sir Context तो दो ही है ना, या तो sideways रहेगा या trending रहेगा. Now you choose your time frame and then you decide in that time frame what you are seeing. Friday को आप अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ओरिजिनल ऑर्डर से की बात शॉर्ट है. Abhishek, I can't hear him, man. Anyone else can hear him? हाँ sir, can you hear me now? Yeah, tell me. I'm saying sir, जैसे फ्राइडे को प्राइस एक्शन वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर some people thought बैंक निफ्टी was a short, even I thought either it was a short long, मतलब confusion था. तो basically because sideways था और हम लोग sideways को eliminate करके ट्रेंड खोजने का ट्राई कर रहे थे, we were getting screwed, right? Yes, and that's why I said do paper trade for 1 month so that you start seeing things. Problem is everyone wants to be rich in one day. हाँ, got it. Do one for 1 month, all these paper trades and all. You'll not lose money, you'll not lose confidence. You will understand better what is happening, how to identify. उसके बाद करो trading. और एक ट्रेंडिंग डे के बाद दूसरा साइडवेज डे आता ही है तो No. हाँ, तो ऐसे सब don't make all these assumptions. क्यों ट्रेंडिंग डे के बाद, ट्रेंड के बाद तो ट्रेंड ही आता है मोस्टली. किसने बोला कि ट्रेंडिंग डे के बाद साइडवेज आता है? अगर ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज आता तो ये क्या है? ट्रेंड 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 ट्रेंड. Don't make such assumptions unnecessarily. Chalo guys, anyway, enjoy your weekend and go look at the charts, decide what you have to trade tomorrow, when you have to trade, and be a bit smart. नहीं समझ में आ रहा है जब चीजें, तो बैठ के देखो, देखने में कुछ बुरा नहीं है. इन केस अगर हेज करना है, जैसे आपने बोला था कि लॉन्ग जा रहे, आई थिंक एलएनटी में बोला था लॉन्ग गए हेज कर सकते हैं. तो जैसे अभी ये वाला ही चार्ट देख रहे हैं इंडियन होटल का, जैसे 184 पे अगर हमने एंट्री 184 या 180 पे हमने एंट्री ले लिया रहता एंड यू गॉट अ गुड ट्रेंड, तो आपने यहाँ पे हेज कर लिया रहता था क्या? Hedging is what? Reducing your risk. So you just see your risk. If you think the risk is too huge for you to, it's not within your appetite, so then you have to make a decision. Do you feel कि हाँ नहीं यार, trend is very strong and I should take this amount of risk? In that case, you hedge to minimize your risk. But on the other times, you might also feel कि it's a risky trade. In that case, there is no point hedging. You just leave that trade. Okay. सर एक क्वेश्चन जो मैंने चैट पे भी लिखा है. सो कैन यू प्लीज लेट अस नो द पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डे, बिकॉज बैंक निफ्टी का एक मैंने पी लिया था छोटा, बट स्मॉल प्रॉफिट में मैं निकल गया. एंड देन व्हेन आई सॉ दैट it gave immense, I entered it on 121 and it gave around that PE option, it gave around 550 or something. See, there is no difference on how you trade on an expiry date or a normal date, to be very honest. The only difference is you have to be cognizant of the premium and time. Okay. On an expiry date, since you have only 6 hours of trading, 7 hours of trading, the premium will decay faster and at the same time it will grow faster. So if the move is in your direction, the premium will run faster in your direction. 100 पॉइंट के मूव अगर एक्सपायरी दिन पे जब होता है तो आपका इन द मनी ऑप्शन जो होता है वो 150-200 पॉइंट बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. ठीक है. बट सिमिलरली अगर 100 पॉइंट का मूव अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो जरूरी नहीं है आपका जो प्रीमियम है वो भी 100 पॉइंट मूव, इट माइट जस्ट मूव 20-30 पॉइंट्स, बिकॉज so theta works on both sides, it's not only on one side. So that's something which just you have to be cognizant of. मान लो आधा घंटा ट्रेडिंग का बचा है, you are getting an entry, मान लो आधा घंटा बचा है, 37,900 पे आपका बैंक निफ्टी है ना, आप 38,000 का कॉल खरीदते हो यार. सो 38,000 का कॉल जो है जैसे ही
movement opposite direction में होगी, it will fall much more because only 1 hour of trading is left. While at the moment it starts going over 38,000, it will run much faster because again the time is less and people will try to buy it. So just that premium you have to keep in mind how much you are actually paying at what point of time. 1 घंटा बचा है 37,900 पे हो 38,000 का कॉल 10 रुपए का है तो खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज 1 घंटे में 100 पॉइंट 110 पॉइंट हो जरूरी नहीं है वो. Anyway, I'm sure I would have not given a very definite answer, but can't give a definite answer on this. Yeah, इसके लिए definite answer हो ही नहीं सकता. Yeah, that's the thing. It's more about understanding how options work. You have to keep in mind every time you buy an option, how it works is that it should become an in the money option the moment you buy. After some time, if it doesn't become your in the money option, you will lose money. So whenever you are buying an option, that's what your thinking or logic should be, that क्योंकि इतना movement आ जाएगा कि ये option मेरा in the money हो जाएगा. अगर that's what you are achieving, you will make money. If that's not something which is happening, you will not make money. And whatever is the time that is left. Okay. Mm-hmm. Yeah. Chalo guys, take care. This answer definitely works. Thanks. Chalo, and thanks and enjoy. And don't lose money, guys. Yeah, and if you lose money, learn to stop that before it becomes too big. There is no point trading. So shall we prefer long trades more than short trades? I never said something like that. We discussed 2.5 hours only to not answer something so easily, right? Whether to take long or short. It depends totally on what you are trading. So something like the Nifty, if you're looking at say 16,500 level and you're looking at a 50-60 point move. We discussed, man. Nifty was very clear. Between that range, you have to take that range bound kind of trade. Goes above, below, take that. So what I'm asking is, if you're looking at buying a call and Nifty is at 16,500 and we are looking for a say 60-70 point move, then should we buy a 16,400 call or 16,300 call? Like which call should we go for? You're looking for just 50-60 point of move. Okay, buy in the money or at the money. Okay. Don't buy deep in the money. Why pay extra premium? Right. So buy just at the money, in the money. 16,500 पे 50 point का move expect कर रहे हो, buy 16,500 call then. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Chalo guys, take care, enjoy. I'll upload the video very soon. Can you please upload this as soon as possible, because we missed out the first half. So Okay. By 10 I will try to upload. Okay, because जो थोड़ा टाइम लग जाता है इसको कन्वर्ट करने में, चेंज करने में, 2.5 घंटा 3 घंटा तो लग जाता है उसी में. उसके बाद अपलोड होने में आधा घंटा. Okay, so by 10 it should be there. Okay. 10. Thank you. Yeah. Okay, Thank you. guys. Thank you. See you. Thank you. Bye. Bye.